Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. In our previous class, we have good morning. In our previous class, we have started with the topic water, and we have seen that water is a most important natural resource, and it is a renewable resource. Then we have seen that only 1% of fresh water can be used for human beings. Further, we have also studied that the conservation of resources are important, as the water is conservation of water is also uh, important. And here, before that, we have read about what is the uses of water here, for what purpose we are using the water. Now today we are going to start with problems of water availability. What are the problems people are facing with the water availability of the water? Now there is scarcity of water in many regions of the world. We have seen that many regions of the world are having scarcity of water. Less water is available in many parts of the world. Most of the Africa, West Asia, South Asia, parts of the Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortages in the freshwater supply. So all these areas of the world, regions of the world, are facing the shortage of water supply, fresh water supply. So uh, and countries located in the climatic zone, the countries which are located in the climatic zone, especially special type of climate where rainfall is very less, most susceptible to the droughts. Where rainfall is less, then the water conservation collection of the water is very less in the water reservoirs, and so they are more susceptible to the droughts. More susceptible to the droughts means वहां पर ज्यादा सूखा पड़ने के चांसेस रहते हैं. एंड दीज रीजन्स ओनली फेस द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी. पानी की कमती इन मेनली इन रीजन्स पे ज्यादा देखने को मिलती है. Thus, water shortages may be consequence of variations in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation. Over exploitation means whatever quantity we are in need of water, मोर देन दैट वी आर यूटिलाइजिंग. उतना ज्यादा हम वो काम में ले रहे हैं, जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा हम काम में ले रहे हैं. प्लस द एनुअल प्रेसिपिटेशन मीन्स एनुअल रेनफॉल. रेनफॉल अगर लेस है तभी भी वाटर शॉर्टेज है. ओवर एक्सप्लॉइटेशन है मीन्स ज्यादा काम में ले रहे हैं पानी, जितना जरूरत नहीं है फिर भी हम ले रहे हैं. देन इज ऑल्सो वाटर स्कैसिटी प्रॉब्लम विल अराइज. इवन द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कंटेमिनेशन मीन्स पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर. अगर हम वाटर को में गंदगी अगर ज्यादा फैल रही है पानी के सोर्सेज में, देन ऑल्सो इट इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन यूज, एंड दैट इज वाई इट इज कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज. तभी भी पानी की कमती हो सकती है. ओके, so these are the problems of water availability. Now have you ever heard about water market? कभी आपने water market के बारे में सुना है? ओके. अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र. अमरेली सिटी है एक, अमरेली अमरेली करके नाम का जगह है सौराष्ट्र में. रीजन्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख. अमरेली में कितनी पॉपुलेशन है? 1.25 lakhs, and is completely dependent on water purchasing of water from nearby talukas. Means totally इतनी population है 1.25 lakh, but they are all dependent on the purchasing of water. water की खरीदना पड़ता है उनको, पानी की इतनी कमी है इस रीजन में तो उनको पानी खरीदना पड़ता है from nearby talukas, means nearby areas से. Clear? Now, conservation of water resources. Access to clean and adequate water resources is the major problem facing the world today. अब आज जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, what is the major problem जो फेस कर रहा है वर्ल्ड? That is the access to clean and adequate water. Access means the reach of human beings for the clean and adequate water. So this is the problem today which human beings are facing. They are not able to reach the or to have the clean and adequate means proper quantity of clean water. Now steps have been taken to conserve these dwindling resources.
अब स्टेप्स लिए गए हैं इस कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व दिस डुडलिंग रिसोर्सेज. डुडलिंग रिसोर्सेज मीन्स hello. Yes, ma'am. Yes, what does the word dwindling means? Can anybody tell me? Okay, I'll tell you that the quantity of water sometimes increases and sometimes decreases. It is not static. मतलब एक समान नहीं रहती है, कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है. So now steps have been taken to conserve this dwindling resource. Dwindling resource means कभी कभी ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है एक तरीके से. Even though water is a renewable resource, हम देखते हैं कि water renewable resource है, its overuse and pollution make it unfit for use. जो pollution हो रहा है water bodies में और जो overuse हो रहा है, more than we want, we are using the water. In that case, the scarcity of water arises. Scarcity means water की कमी होने लगती है. Now what is the reason of the pollution of the water bodies? Discharge of untreated or partially treated sewage. Discharge of untreated or partially treated sewage means जो अपने घरों से जो गंदा पानी निकलता है, अगर उनको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू प्रॉपर उनको रास्ता पाथ नहीं दिखाया जाए, then definitely they will go to the clean water resources और वो सारा पानी फिर गंदा कर देंगे. That is why discharge of untreated or partially treated sewage, जो सीवेज से निकलता है, जो नदियों जो नालियों में से, घरों में से पानी निकलता है गंदा पानी, उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वो पूरा पानी दूसरी जगह का गंदा नहीं करें. Then agricultural chemicals and industrial effluents in the water bodies are the major contaminants. Now another thing is agricultural chemicals. The use of chemicals and fertilizers also make the water resources polluted. Industrial effluents means the industrial wastes which are coming out from the industries and the factories. When they are not treated properly, then these factories also throw their waste in the near, because these industries and factories are nearby the river or water bodies only, so they throw the waste of industries into the water bodies, and that makes the water bodies contaminated. गंदा कर देते हैं वो पानी वहां का. So these are the, you can mark, these are the reasons why water bodies are contaminated. गंदा पानी कहाँ से हो जाता है? So they pollute water with nitrates. अब जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, इससे क्या होता है, ये नाइट्रेट्स होते हैं इसमें जो कि पानी को pollute कर देते हैं. Even metals are there and pesticides are available in these types of water which is taken out from the industries or agricultural purpose or industrial effluents and all. Now most of these chemicals are non-biodegradable. Most of these chemicals are non-biodegradable means आसानी से उनको नष्ट किया नहीं जा सकता. जो भी chemicals ये निकल रहे हैं फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर. और ये एक तरीके से जब वही पानी ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, देन इट रीच टू द ह्यूमन बॉडीज ऑल्सो. Now water pollution can be controlled by treating their effluents suitably before releasing them into the water bodies. So water bodies में वो पानी, गंदा पानी डालने से पहले ही उनको पहले से ही ट्रीट कर देना चाहिए कि ज्यादा गंदगी नहीं फैले वाटर बॉडीज में. Clear? I hope till here it is clear. Yes, ma'am. Okay, fine. So now coming to the paragraph where we can see that how we can conserve water. Now forest and other vegetation cover slow down the surface runoff and replenish underground water. Now if that is why it is said that grow more and more trees. So if more and more trees are grown, forest cover will grow and other vegetations cover also will grow. And now this growing of trees and increasing of the forest will slow down the surface runoff. Slow down कैसे करेगा surface runoff? अगर पेड़ पौधे उगा दिए जाएंगे तो क्या होगा कि वो उनकी रूट्स में जो है वो मॉइस्चर
कंट्रोल करके रखेंगे, मॉइस्चर गेन करके रखेंगे, और जो पानी है वो सीधा बहेगा नहीं, बट वो रूट्स ऑब्जर्व कर लेंगी पेड़ों की, तो इससे सरफेस रन ऑफ नहीं होगा, ऊपर से पानी बहना शुरू नहीं करेगा, बट इट विल बी ऑब्जर्व बाय द roots of the plant and it will help to replenish the underground, और जो अंडरग्राउंड में जो ह्यूमिडिटी है या जो पानी बोल सकते हैं, एक तरीके से सेव करके रख सकते हैं through the growing of the plants. Water harvesting is another method. अब ये second method क्या है? Water harvesting to save the surface runoff. Water harvesting means पानी को हार्वेस्ट करने के लिए कैसे, कि पानी को अच्छे से यूटिलाइज करने के, एकदम से पूरा ऐसे नहीं करना है कि पूरा पानी नल खोल के छोड़ दिया और पूरा पानी बह रहा है और वो प्लांट्स के काम में भी नहीं आ रहा, बट इट शुड बी टेकन केयर दैट वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी properly done. The canals used for irrigation field should be properly lined to minimize loss of water seepage. Now canals means नहरें, नदी के साथ छोटी छोटी जो नहरें होती हैं वो बनाई जाए ताकि उनसे क्या हो सके, फील्ड्स को पानी दिया जा सके, एंड इट शुड बी लाइन टू मिनिमाइज द लॉसेज ऑफ वाटर सीपेज, ताकि वो नहरों के थ्रू पानी एग्रीकल्चर फील्ड्स को जा सके और पानी लॉस नहीं हो. Then sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. Now sprinklers should also be used. Water sprinklers means जो स्प्रिंग करते हैं वाटर्स को, उस टाइप से टेक्नोलॉजी से वो मेथड्स यूज करना चाहिए ताकि वाटर ज्यादा से ज्यादा पानी बहे नहीं, और ना ही एक जगह अगर ज्यादा भी इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, देन ऑल्सो इट विल बी ऑफ नो यूज. सो एट दैट टाइम, so it should be checked that through the use of sprinklers we can check upon the water losses and the seepage and evaporation purpose. Then in dry regions, जो सूखे एरिया है, that is the deserted areas with high rates of evaporation, जहाँ पर evaporation बहुत ज्यादा होता है, drip और trickle irrigation is very useful. यहाँ पर जहाँ dry regions है वहाँ पर drip and trickle irrigation, this is another type of irrigation. The word is used for a type of irrigation purpose, जहाँ पर fields को पानी दिया जाता है. अब dry regions में ये drip और trickle irrigation useful method है. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. और इसी से हम water conserve कर सकते हैं by using these, like to increase the forest cover, to use water harvesting, in dry region to use drip and trickle irrigation, sprinklers should be used. So these are all the methods through which we can conserve the water. Now another here, rainwater harvesting. It is very important. Rainwater harvesting is a process of collecting rain. Now what is rainwater harvesting? Rainwater harvesting एक तरीके से method है which we collect the rainwater from the rooftops. Now here the houses are having the roof, छत होती है, वहां से एक इस टाइप से प्रोसेस बना दिया जाता है कि whatever the rainfall is there on the rooftop, that is means carried away through the pipes and all to the underground, means down on particular areas or in vessels or in tanks and all, it is collected, ताकि वो भी पानी वेस्ट नहीं हो. तो इस टाइप से वहां पर थ्रू पाइप्स और कुछ इस टाइप से प्रोसेस मेथड बना दिया जाता है कि वहां से पानी सारा बह करके और नीचे बड़ा टैंक वगैरह बना दिए जाते हैं ताकि वो पानी वहां पर कलेक्ट होता जाए, एंड दैट वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर purposes, irrigation or any other purpose. Clear? So rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from rooftops and directing it to an appropriate location. एक particular location बता दी जाती है where it is stored for the future use. Future में काम लेने में आसानी रहती है उस पानी को. On an average one spell, and on average one spell means एक समय में जब वो rainfall होती है for 2 hours, 2 घंटे के लिए अगर continue rain होती है, then it is enough to save 800 liters of water. 2 घंटे अगर continue rainfall होती है तो how many liters of water is saved from this rainwater harvesting? 8,000 liters of water. Clear? I hope till here it is clear. Okay, now natural vegetation and wildlife. Now this was all about water. We have seen
what is water, importance, use of water, then conservation of water. Now coming to natural vegetation and wildlife, that is the last topic of this lesson. Natural vegetation means plant life and wildlife means animal life. Some school children were visiting an exhibition. Now this is a situation given when the school children are taken to visit an exhibition of handicrafts, जहाँ पर handicrafts हाथ के बने हुए सब सामान का एक exhibition रखा गया है, and the school children are visiting. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Now whatever articles are collected in this exhibition, they are brought from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed. Mona एक बैग उठाती है और exclaimed. Exclaim means बोलती है, this is a beautiful handbag. Yes, it is made from jute. The teacher, jute that the teacher said. Teacher ने जैसी उनके बैग हाथ में हैंडबैग देखा, उन्होंने बोला कि किसका बना हुआ है ये, जूट का बना हुआ है. And do you see those baskets, lampshades and chairs? That means all of these things, handicraft items were made from hand and it was kept in the exhibition. So now teacher is pointing out towards baskets, lampshades and chairs. These all things are also made from canes and bamboo. Cane जो होती है लकड़ी होती है और bamboo trees की जो लकड़ी होती है उससे बने हुए हैं. In the eastern and the northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. So where does bamboo grows in plenty? Where does bamboo grows in plenty? Eastern and northeastern humid regions of India. Hello, everyone is sleeping or what in my class? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Jessie was excited. Now a student, Jessie, was excited to see the silk scarf. As Mona has collected what? Mona has seen what? Handbag. The same way Jessie has seen the silk scarf. Silk scarf. Very good. Now see this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from where? Silkworms. Silkworms. And that are, very good. That are breed on mulberry trees. Mulberry trees में जो mulberry tree है, एक तरीके का नाम है mulberry. उस tree पे ये silkworm रहते हैं और वो silkworm से हमें क्या मिलता है? Silk. हाँ. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. Now the children understood that we get many things from the plants. Clear? Like here we see jute. Handbag was made from jute. Plus basket, lampshade, chairs were made from canes and bamboos. That is also the from the plant only. Silkworm, which is breed on the mulberry trees. That also we get from the silk from the silkworm. So many things we are getting from the plants. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Underline this. What is biosphere? What is biosphere? Bhavika, what is biosphere? Hello. Where natural vegetation and wildlife exist. Very good. Where natural vegetation and wildlife exist, and that exists in a which zone? Narrow zone. Biosphere. Narrow zone of contact between. अभी narrow zone कहाँ पर है? किसके बीच में? Lithosphere, Very good. hydrosphere and atmosphere. Yes. इनके बीच All में by very good. इन layers के बीच में एक narrow zone है, वहां पर vegetation और wildlife है, that is called as biosphere. Now in the biosphere, living beings are interrelated. Biosphere, living beings are interrelated. How? Plants depends on animals, animal depends on plants. You might have Plants. read in previous classes also. Plants कैसे depend होते हैं animals के लिए? Animals पे Yes, ma'am. animals कैसे depend होते हैं for habitation and all. So both are interrelated. This is life supporting system and is called as ecosystem. When in the biosphere, when human living beings are interrelated and interdependent, it is called as ecosystem. Now this is the definition of ecosystem. Underline this.
This is the definition of ecosystem, and this is the definition of biosphere. Clear? Now, vegetation and wildlife are valuable resources. Both vegetation and natural vegetation, that is plant life and wildlife, both are valuable resources. Plants provide us, plants, what do we get from plants? Plants से हमें क्या क्या मिलता है? Plants provide us timber, shelter to animals, oxygen, Oxygen we breathe. protect the soil. soil, protect the soil, yes, which is essential for growing the crops. Then acts as a shelter belts and help the storage of the groundwater, helps us fruits, nuts. It gives us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. So there are innumerable uses of the plant, and you can add more. So in this paragraph, you have seen the uses of plant. From here, it is given the uses of plant. You can write down your uses of plants from here to here, the whole paragraph. I hope till here it is clear. Yes, ma'am. Okay. Now, Yes, ma'am. okay. Now, wildlife includes अब wildlife के बारे में, animals के बारे में, that includes animals, birds, insects, as well as aquatic life forms. Aquatic means water animals also. वाइल्ड में हम इंक्लूड करेंगे एनिमल्स को, बर्ड्स को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, प्लस वाटर एनिमल्स ऑल्सो. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल. अब ये एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, हाइड्स. हाइड्स मीन स्किन एंड वूल ऑल्सो. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी. बीज कहाँ से मिलता है हमें? हनी बी से. हेल्प्स इन द पॉलिनेशन. दीज इंसेक्ट्स ऑल्सो हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स. मीन्स इनके सीड्स लेकर के वो मीन्स जहां पर वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, वो फ्लावर्स के जो सीड्स हैं अंदर के, जो वो पॉलिनेशन जो है वो ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स जो है वो उनके पाँव पे चिपक जाते हैं, और जब वो उड़कर दूसरी जगह बैठते हैं, देन इट इज कैरिड अवे टू अदर प्लेसेस एंड हेल्प thus help in the pollination. Clear? And have important role to play as decomposers in the ecosystem. इकोसिस्टम में एक डिकम्पोजर्स के रूप में भी ये काम करते हैं. डेट इज टू क्लीन द एनवायरमेंट. जो भी जानवर वगैरह मीन्स मर जाते हैं, डेथ हो जाती है और एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं, तो कभी कभी ये डिकम्पोजर्स एनवायरमेंट को साफ भी करते हैं. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल. बर्ड्स क्या है? इंसेक्ट को फीड करती है. कोई इंसेक्ट दिखता है तो इसलिए भी वो डिकम्पोजर्स को में इन्वॉल्व करती है एनवायरमेंट को साफ रखने में. वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड livestock is an scavenger. अब the vulture is a scavenger. वो क्या करते हैं? फीड ऑन द डेड livestock. कोई भी डेड जानवर या इंसेक्ट या बर्ड डेथ हो जाती है तो ये कौन खाता है? वल्चर. एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लेंजर ऑफ द एनवायरमेंट. और इस तरीके से ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वल्चर एनवायरमेंट को क्लीन रखने में. अगर ये नहीं खाएंगे तो क्या होगा? सब जगह जानवर की और बर्ड्स की और एनिमल्स, इंसेक्ट्स की डेड बॉडीज पड़ी रहेंगी, एंड दे विल पॉल्यूट द एनवायरमेंट. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल all are integral, means important to maintain the balance in the ecosystem. I hope till here it is clear. So all the animals, birds, insects, each and every one is very much important. So we'll continue in our next class with this topic, distribution of natural resources. Till then, read till here and try to understand. If any doubt, you can ask me in our next class. I hope till here it is clear, everyone. Yes, ma'am. Okay.